Hi guys, so welcome back to the another video of this channel. So in this video we will talk about a problem which is kth common ancestor in BST. See, it has marked as a medium problem, but in this video I will tell you a solution, I will tell you an approach that will be easy for you. So इसको easy बना देंगे. So let's see the problem statement. So problem is saying that we have given a binary search tree with n nodes. N is greater than or equal to 2. So find the kth common ancestor of node x and y in the given tree and return -1 if it is not possible, like if a kth ancestor doesn't exist. Node x and y will always be present in input BST, and x is not equal to y. This is the main condition, x is not equal to y. So now let's talk about what is ancestor. Ancestors is like the parents, like if you are the children and your fathers and mother are ancestor for you. Like if 40, इफ 40 इज देयर, सो इसका एंसेस्टर क्या होगा? एंसेस्टर मींस इसका पेरेंट क्या होगा? पेरेंट वाली नोड क्या है? 10. इफ वी टेक द 20, so इसका एंसेस्टर फर्स्ट एंसेस्टर क्या होगा? 40, बिकॉज फर्स्ट पेरेंट इज 10, 40 सॉरी, एंड इसका भी एंसेस्टर क्या होगा? 10. सो अल्टीमेटली 20 के एंसेस्टर कौन कौन है? 40 है और 10 है. मींस उसके या तो बोल सकते हैं हम ऊपर वाली नोड मींस से जिस नोड से वो निकला हुआ है, लाइक 40, 20 कहाँ से आया है? 40 से. और 40 कहाँ से आया है? 10 से. तो इसके 20 के एंसेस्टर कौन कौन से हो गए? 40 हो गया और 10 हो गया. ठीक है. First ancestor is 40 and second ancestor is 10, 20 का. So now let's take this example. If x equals to 20 and y equals to 30, and we have to take the second ancestor. Like if we take this example 20, so first ancestor is 40 and second ancestor is 10. So we have to see the x equals to 20 and y equals to 30. X equals to 20 is this node and y equals to 30 is this node. So we have to find the least common ancestor. Like here we have seen that k equals to 2. So mean we have to find the second common ancestor for both nodes 20 and 30. So 20 के लिए फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर क्या है? 40, और 30 के लिए भी फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर क्या है? 40. और दोनों के लिए सेकंड कॉमन एंसेस्टर क्या है? 20 के लिए भी सेकंड कॉमन एंसेस्टर क्या है? 10. और 30 के लिए भी सेकंड कॉमन एंसेस्टर क्या है? 10. बिकॉज दिस इज द फॉर 30 दिस इज द फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर, एंड फॉर 30 दिस इज द second common ancestor, and it is same for both nodes. So 10 will be our answer because 10 is the second common as you can see here, LC of 20 and 30 is 40, first common ancestor, and their second common ancestor is 10 because this is the second common ancestor for both nodes 20 and 30. So let's see this example. This is the important example because if here x equals to 70 and y equals to 60, so if we take this 70, there are two 70s in this example. This is the 70 and this is also 70. If we take this 70 and this 60, then first common ancestor क्या होगा? 30 and second common ancestor क्या होगा? 80. We know about this कि second common ancestor क्या होगा? 80. But the problem is if we take this 70 and this 60, so the first common ancestor will be 30, and the for this first common ancestor is 40, this one, and second common ancestor is this one. So the problem is LC of 70 and 60 is 80. You can see LC of, we are taking this 70 because they are both 270s. So किसको लेना है वो भी हमें पता नहीं है. ठीक है. So LC of 70 and 60 is 80. Means it is talking about this because हमें तो लो मतलब कॉमन एंसेस्टर चाहिए ना. कॉमन इफ वी टेक दिस 70 एंड दिस 60, इसको इस वाले को अभी भूल जाओ. ठीक है. तो फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा? 30 और सेकंड कॉमन एंसेस्टर क्या होगा? 80. नाउ इफ वी टेक दिस 70 एंड दिस 60, इस 70 को भूल जाओ. ठीक है. सो द फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा? इसका कॉमन एंसेस्टर क्या है? 30. इसका कॉमन एंसेस्टर क्या है? मींस नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एंसेस्टर, कॉमन अभी बात नहीं करेंगे. इसका एंसेस्टर क्या है? 30. इसका एंसेस्टर क्या है? 40. बहुत 40 एंड 30 आर नॉट इक्वल बिकॉज इसका एंसेस्टर 30 है, इसका एंसेस्टर 40 है. दीज टू आर नॉट इक्वल. नाउ आगे जाएंगे. इसका एंसेस्टर क्या हुआ? 80 और इस वाले का एंसेस्टर क्या हुआ? 80. सो दिस इज द फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर फॉर 70 एंड 60. दिस इज द फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर विच इज 80. सो यही लिखा हुआ है कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ 70 एंड 60 इज 80, which is the k equals to 1 first common ancestor, and which is equals to root itself. But there doesn't exist second common ancestor in this case
बिकॉज 80 के आगे कोई नोड है नहीं, कोई रूट नोड है नहीं, बिकॉज 80 इज द फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर फॉर बोथ नोड्स 70 एंड 60. सो दिस इज द फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर एंड सेकंड कॉमन एंसेस्टर के लिए आगे कोई रूट्स है नहीं. तो in that case we will return minus 1. So let's see the approach for this. So I have told about this key how it is working, like how these examples are working. So now let's see the approach part is. So approach part is very simple. Like if we take x equals to 20 and y equals to 30, you can see this example x is equal to 20 and y equals to 30 and k equals to 2. Means k equals to 2 is showing like second common ancestor for both nodes. So what we will do is we will have to reach टू एक्स नोड, रूट 4 से एक्स नोड पर जाना पड़ेगा. सो पाथ टू रीच एक्स नोड इज 10 40 एंड 20, 10 40 एंड 20 एंड पाथ टू रीच वाई इज 10 40 and 30, 10 40 and 30. Now what we'll do, like we are traversing the paths, like we are going from root node to x node and we are going from root node to byte node. It is like a DFS approach. We are traversing, it is a depth first search. Means हम ट्रेवर्स ही तो कर रहे हैं उसको, रूट नोड से एक्स को वाई को. तो ट्रेवर्स करने के लिए दो टेक्निक होती है, डीएफएस बीएफएस. सो हेयर वी आर यूजिंग डीएफएस टेक्निक. सो दिस इज द पाथ फॉर एक्स 10 40 20 and this is the path for 10 by 10 40 and 30. Now we will see this is first common ancestor because 40 and 40 both are equal and first common ancestor है ये, ठीक है. और second common ancestor क्या हुआ है, ये 10 10 which is second common ancestor. So in that case we will return 10 because we have to find the second common ancestor. So this is the technique and now we will do the code. So coding part is very simple. What we will do is we have to create a two vectors like path for x, path to reach x and path to reach y, because you can see here path to reach x is 10 40 and 20 and path to reach y is 10 40 and 30. So firstly we have to create two vectors, vector int path to reach x. So sorry, uh, this is a, oh, this is a node star type na? So node star path to reach x, so path x comma path y. So these are the two vectors, path to reach x and path to reach y. Now what we'll do, we'll create a vector like node star dfs टाइप है. तो इसको तो ये फंक्शन किस टाइप का हो जाएगा, void टाइप का, वो dfs. In dfs what I will pass is I'll pass root node, node star, root node, and I will take a vector which is node star which name is initially temporarily vector. temporarily बोल सकते हो या कुछ भी temporarily बोल दो, ठीक है. temp comma int x comma int y comma बस और कोई पास करना, बस भाई हो गया, ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू, फर्स्टली मेरे को रूट नोड को x उस वेक्टर में डालना पड़ेगा क्योंकि हमें तो फर्स्ट एक बार पाथ चाहिए ना इस रूट नोड से इस x का. तो मेरे को फर्स्टली क्या करते हैं, temp डॉट पुश बैक ऑफ रूट नोड, तो रूट का डेटा, ठीक है, उस रूट को मैंने डाल दिया, ठीक है. सॉरी हमने नोड स्टार टाइप लिया ना तो उसको रूट को डाल दिया, बिकॉज हम अगर इंटीजर लेते तो रूट का डेटा डालते, अदरवाइज रूट डाल दिया, ठीक है. नाउ व्हाट आई विल चेक, लाइक इफ आई विल चेक लाइक इफ रूट का डेटा इक्वल टू एक्स, what it is showing, like if root का data equals to x it means we have reached our path. So अगर मैं अपने path सॉरी उस रोड पर पहुंच चुका हूँ रूट रोड से, like you can see here कि रूट का डेटा अगर मेरा 20 हो गया और विच इज इक्वल टू एक्स, सो मेरे को पता चल गया कि ये मेरा पाथ है 10 40 20. सो इस पाथ को मैं क्या कर दूंगा, इस पाथ एक्स में डाल दूंगा. तो टेम्प टेम्प जो भी है टेम्प इक्वल टू सॉरी तो path x इक्वल टू क्या कर देंगे, टेम्प कर देंगे. एंड दिस सेम विल बी फॉर बाई ऑल्सो. सो रूट का डेटा इक्वल टू बाई हो गया, इन दैट केस पाथ ऑफ बाई इक्वल टू टेम्प हो गया. एंड आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू इज आई विल डू अ फंक्शन कॉल. मैं इस फंक्शन कॉल लेफ्ट के लिए जाएगी और राइट के लिए जाएगी. तो फंक्शन कॉल क्या होता है, डीएफएस ऑफ रूट का लेफ्ट कॉमा
temporary vector comma x comma y, and same function call will be for right also. So this will be right. लेफ्ट के लिए फंक्शन कॉल वाली, राइट के लिए फंक्शन कॉल वाली। आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू, मेरे को पॉप भी करना पड़ेगा, तो टेम्प डॉट पॉप बैक। ठीक है, सो ये मेरा डीएफएस फंक्शन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, नाउ इसको एक यहाँ पे पुश कर, मतलब डाल देते हैं कि हमने फंक्शन बनाया है। तो सॉरी, नोड स्टार विच इज टेम्परेरी वेक्टर, एंड यहाँ पे फंक्शन बनाया तो डी एफ एस ऑफ, इसमें क्या पास करेंगे, रूट पास कर रखा है, टेम्परेरी वेक्टर पास कर रखा है, ठीक है, एक्स पास कर रखा है, और बाई पास कर रखा है। ठीक है, बस इतना ही मेरे पास कर रखा है इसमें। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रे, और नाउ मैं आई हैव टू वेक्टर्स, पाथ एक्स भी है, एक्स वाला पाथ भी है, और बाई वाला पाथ भी है। नाउ आई हैव टू ट्रेवर्स द बोथ वेक्टर्स, आई वाला, सॉरी एक्स वाला और वाई वाला, बहुत को दोनों को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक आई ले लेते हैं और एक वाइल लूप लगा देते हैं, वाइल आई इज लेस देन पाथ एक्स डॉट साइज। सी, मैंने पाथ एक्स पाथ वाई यहाँ पे क्यों नहीं डाले, क्योंकि मैंने ग्लोबली दोनों को इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, तो मैं अभी कहीं से भी इनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो आई लेस देन पाथ एक्स डॉट साइज, एंड आई शुड बी लेस देन पाथ बाई डॉट साइज, क्योंकि दोनों के पाथ से छोटा ही होना चाहिए आई। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन, नाउ दिस इज द मेन कंडीशन, पाथ एक्स, सॉरी एक्स ऑफ आई इक्वल टू पाथ, सॉरी पाथ बाई ऑफ आई। इट मीन्स these are the ancestor, जो भी मेरे पास x और y है, you can see here 10 40 20 10 40 30, सो ये इक्वल है। अगर x और y के दोनों एलिमेंट इक्वल है, इट मीन्स दे आर एंसेस्टर्स, सो इन दैट केस आई विल इंक्रीज माई i, सो i प्लस प्लस, है ना। और आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू, मेरे पास x है, y है, अब मैं i जब तक बढ़ेगा जब तक के लिए वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब ना वो मैं क्या करूँगा, i को आई माइनस के कर दूंगा। ठीक है, आई विल टेल यू आई आई एम डूइंग दिस, i को आई माइनस के, एंड नाउ आई विल चेक, लाइक अभी बता देता हूँ। ठीक है, अगर मेरा i 1 हुआ, ठीक है, कि लॉन्गेस्ट कॉमन एंसेस्टर अब 1 तक आ रहा है मेरा, ठीक है, i 1 हुआ, तो और k इक्वल टू 2 है, सो i इक्वल टू, सो 1 इक्वल टू 1 माइनस 2, which is minus 1, so I equals to minus 1. In that case, what I'll do, it is not possible to reach the second ancestor, it is same like this case कि, sorry this case कि 70 का कॉमन एंसिस्टर 40 भी है 80 भी है, बट 60 और 70 दोनों का कॉमन एंसिस्टर कौन सा है, फर्स्ट कॉमन एंसिस्टर ये 80 है। ठीक है, और सेकंड कॉमन एंसिस्टर पॉसिबल ही नहीं है। सो इन दिस केस I will check a condition like if I is less than 0. In this case, I will return simply minus 1. And if it is not, like I is not less than 0, so in that case I will return या तो path x का वो कर दो, path x of I dot path x of I का डेटा प्रिंट कर दो, या पाथ एक्स ऑफ बाई का डेटा प्रिंट कर दो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। ठीक है, सो वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट कंडीशन, आई थिंक ये अभी तक समझ में आ गया होगा, पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इफ कि हम ट्रेवर्स करते जा रहे हैं बाई लूप लगा के, कौन कब तक इक्वल है एलिमेंट्स, लाइक यहाँ तक कब तक इक्वल है, आई इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट कॉमन एंसिस्टर मिल को मिल चुके हैं, दोनों इक्वल है, तो आई इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे आई इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, तो अब मेरे को चेक करनी है आई इक्वल टू आई माइनस के, तो 2 इक्वल आई इक्वल टू 2, आई क्या, आई माइनस के, आई क्या है 2, तो 2 के क्या है 2, सो 2 minus 2 will be 0, I equals to 0. It means it is not less than 0. It is perfect condition. If it is less than 0, if like if in this case like it is 10, it is 11. So I equals to 1 ही होता, क्योंकि ये वाला इक्वल नहीं है उस केस में, I equals to 1 होता, तो I equals to I minus k करते, तो I equals to 1 minus 2 करते, which is minus 1. So in that case, I less than 0. In that case I will return simply minus 1. So that's why I have done this. Now let's compile and run this and see if this will work or not. So it is giving me some fault. Okay. So segmentation fault. So कुछ गड़बड़ की है, ठीक है, गड़बड़ देखते हैं क्या गड़बड़ की है। ठीक है, temp dot pop back
सो यहाँ पे अगर हम बाई रेफरेंस पास करें, ठीक है, वैसे बाई रेफरेंस उससे कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, उससे तो नहीं आई है, मतलब दिक्कत कुछ और है इसमें. The time I the monitored command dump the code. So let's see this what is. So in this problem I have missed a condition, like I have to check if root equals to null. If अगर मेरा root ही null है, in that case I have to simply return. So now let's compile and run this code. Yeah, it is giving me your output is changed, expected is 40. So how it is possible? So output is changed here. So we are getting the correct answer, but why it is showing like this? Expected is 40. It should be 10. Let's say that submit this code. कुछ बग होगा शायद, मेरे को पता नहीं है क्योंकि हाँ देखो, सारे टेस्ट केस पास हो गए ना, कुछ बग था उसमें, पता नहीं क्यों. सो नाउ वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर. सो एक बार फिर से देख लेते हैं कि डीएफएस यूज किया, ठीक है. हम एक्स और बाई दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, एक्स ये है बाई ये है. तो एक्स रूट नोड से एक्स तक का पाथ निकाल रहे हैं, रूट नोड से बाई तक का पाथ निकाल रहे हैं थ्रू डीएफएस अप्रोच. एंड नाउ वी आर चेकिंग लाइक how many ancestors are there, common ancestors are there. If common ancestor is exist, so in that case I will simply increment the I. And now I am checking like I equals to I minus k. If I is less than 0, in that case I will return -1, and otherwise I will return path of I का data. So this was a simple code. If you find this helpful, then please like, share, subscribe. तब के लिए bye.